साथीभाइहरू अगाडि बढौँ। यस क्वेसनमा पनि हामीलाई तीनवटा एक्सप्रेसन दिएको छ र वी हेभ बिन आस्क्ड टु फाइन्ड द एचसीएफ। फर्स्ट एक्सप्रेसन हामीलाई दिएको छ x क्यूब माइनस 1। दिस क्यान बी रिटन एज x होल क्यूब माइनस 1 होल क्यूब। सो दिस इज इन द फर्म अफ a क्यूब माइनस b क्यूब हैन। सो आई क्यान राइट इट एज a माइनस b भनेको x माइनस 1 टाइम्स अफ x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको 1 स्क्वायर विच विल गिभ मी 1 राइट। अब सेकेंड एक्सप्रेशन में वी हैव बीन गिवन x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। यसका लागि हामी के गर्छौं भने वी विल टेक दिस टू टर्म्स फर्स्ट x टू द पावर 4 एंड 1। हामी लेख्न सक्छौं x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर राइट। मैले x टू द पावर 4 लाई x स्क्वायर होल स्क्वायर लेखे, 1 लाई 1 होल स्क्वायर लेखे र x स्क्वायर लाई मैले यता लेखेको छु। ओके, नाउ दिस इज इन द फर्म अफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो आई कैन राइट इट एज a plus b whole square minus 2 into a into b plus x square. Okay, now this can be written as x square plus 1 whole square minus, अब यो भनेको मेरो कति भयो, this is 2x square and then we have plus x square। यसलाई मैले सल्भ गरे भने I can write it as x square plus 1 whole square minus 2x square plus x square will give me minus x square। अब यो minus x square लाई म minus x whole square लेख्न सक्छु right। Now this is in the form of a square minus b square, so I can write it as x square plus 1 minus x times of x square plus 1 plus x। अब यसलाई रिअरेन्ज गरेर लेखौं त we can write it as x square minus x plus 1 times of x square plus x plus 1। okay, अब थर्ड एक्सप्रेसन हामीले के दिएको छ त्यो हेरौं। थर्ड एक्सप्रेसन has been given as x cube plus 1 plus 2x square plus 2x right। Now this can be written as, अब मैले x cube plus 1 हेरे भने I can write it as x cube plus 1 whole cube र यसबाट म 2x कमन लिन सक्छु। So I can write 2x times of x plus 1 हैन। Now this is in the form of a cube plus b cube, so I can write it as x plus 1 times of x square minus x plus 1 plus 2x times of x plus 1 राइट। अब मसँग यी दुईवटा टर्म्स छन्, यी दुईवटा टर्म्सबाट म x प्लस 1 कमन लिन सक्छु। सो आई क्यान राइट इट एज x प्लस 1 टाइम्स अफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस 2x। ओके, नाउ दिस विल बी x प्लस 1 टाइम्स अफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x विल गिभ मी प्लस x प्लस 1। ओके, सो अब यदि मैले फर्स्ट एक्सप्रेसन, सेकेंड एक्सप्रेसन, थर्ड एक्सप्रेसन हेरे भने आई क्यान सी दैट x square plus 1 is common in all the three expressions right, x square plus x plus 1। so this is our HCF। okay, साथीभाइहरू अगाडि बढौँ। यस क्वेसनमा पनि हामीले तीनवटा एक्सप्रेसनको HCF फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। फर्स्ट एक्सप्रेसन इज 5a क्यूब माइनस 20a। अब यसबाट हामी के कमन लिन सक्छौं, यी दुईवटा टर्म्सबाट हामी 5a कमन लिन सक्छौं। हामीले 5a कमन लियौं भने वी क्यान राइट 5a टाइम्स अफ a स्क्वायर माइनस 4 हैन। सो दिस क्यान बी रिटन एज 5a टाइम्स अफ a होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। दिस इज इन द फर्म अफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो आई क्यान राइट 5a टाइम्स अफ a माइनस 2 टाइम्स अफ a प्लस 2। ओके, अब सेकेंड एक्सप्रेसन हेरौं। सेकेंड एक्सप्रेसनले भन्छ a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 10a। अब यस तीनवटा टर्म्सबाट पनि हामी a कमन लिन सक्छौं। सो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10 राइट। अब यदि हामीले यो ब्र्याकेट भित्रको टर्मलाई, यो ब्र्याकेट भित्रको एक्सप्रेसनलाई फ्याक्टराइज गर्न खोज्यौं भने के हामी यसलाई a प्लस b होल स्क्वायर को फर्ममा लाग्न सक्छौं? सकिँदैन जस्तो देखिन्छ है। तर हामी के हेर्न सक्छौं भने यो 10 र यहाँको 1 को प्रोडक्ट विल बी 10 हैन। बिचमा हामीलाई कति चाहिएको छ 3। सो यदि हामीले 5 माइनस 2 गर्यौं भने हामी बिचको 3a पाउँछौं राइट। सो आई क्यान राइट a टाइम्स अफ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2a माइनस 10 हैन। नाउ दिस क्यान बी रिटन एज a टाइम्स अफ, यो दुईवटा टर्म्स हेरौं। अब यी दुईवटा टर्म्सबाट मैले a कमन लिए, आई क्यान राइट a टाइम्स अफ a माइनस 5 प्लस, अब यी दुईवटा टर्म्सबाट मैले फेरि 2 कमन लिए, आई क्यान राइट a माइनस 5 हैन। So this will be equal to a times of a minus 5 times of a plus 2। okay, त्यसै गरी थर्ड एक्सप्रेसन हामीले दिएको छ। थर्ड एक्सप्रेसन इज a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 8।
right? Let us consider these two terms, a cube plus 8. a cube plus 8 लाई म यता लेख्छु, त्यस पछाडि I will write minus a square minus 2a. okay, अब a cube can be written as a whole cube plus 8 can be written as 2 whole cube minus, अब यी दुईवटा टर्म्सबाट म माइनस a कमन लिन्छु, I can write a plus 2, right? Now this is in the form of a cube plus b cube, so I can write a plus b, that is a plus 2 times of a square minus 2a plus 4 minus a times of a plus 2. अब हामीसँग अब यी दुईवटा टर्म्स छन्, यी दुईवटा टर्म्सबाट म a plus 2 कमन लिन्छु. This can be written as a plus 2 times of a square minus 2a plus 4 and then we have minus a. यसलाई मैले सल्भ गरेँ भने I'll get a plus 2 times of a square minus 3a plus 4. अब यदि हामीले फर्स्ट एक्सप्रेसन सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेऱ्यौँ र थर्ड एक्सप्रेसन हेऱ्यौँ भने we can say a plus 2 is common in both the three expressions, a plus 2, a plus 2 and a plus 2, right? So our HCF will be equal to a plus 2. okay, साथीभाइहरू अगाडि बढौँ. अब यस क्वेसन हामीलाई एलसीएम फाइन्ड गर्नुपर्ने छ र हामीले दुईवटा एक्सप्रेसन दिएको छ. फर्स्ट एक्सप्रेसन हेज बिन गिभन एज x to the power 4 plus x square y square plus y to the power 4, राइट? अब म x to the power 4 plus y to the power 4 लाई एक ठाउँमा लेख्छु and then I'll write x square plus y square. okay, अब यो छ मेरो x to the power 4 plus y to the power 4. अब x to the power 4 can be written as x square whole square, y to the power 4 can be written as y square whole square plus x square y square. Now this is in the form of a square plus b square, so I can write plus x square y square, right? अब this can be written as x square plus y square whole square minus 2x square y square plus x square y square minus 2x square y square plus x square y square will give me minus x square y square, right? Now this can be written as x square plus y square whole square minus xy whole square. Now this is in the form of a square minus b square, so I can write this as x square minus xy plus y square times of x square plus xy plus y square. okay, अब हामीलाई सेकेन्ड टर्म के दिएको छ, सेकेन्ड टर्म हेज बिन गिभन एज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. सेकेन्ड टर्म इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. दिस क्यान बी रिटन एज एक्स माइनस वाई टाइम्स अफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. अब यदि हामीले एलसीएम निकाल्नु पर्ने छ भने सबभन्दा पहिला हामी के लेख्छौँ, ती टर्म्सहरू जुन दुवै एक्सप्रेसनमा कमन छन्. सो आई क्यान सी दिस इज कमन इन बोथ द एक्सप्रेसन्स, सो आई क्यान राइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. त्यस पछाडि अरू कुनै टर्म्स कमन छन् छैनन्, सो म के लेख्छु, ती टर्म्सहरू जुन रिमेनिङ टर्म्सहरू छन् दुवै फर्स्ट र सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा. सो आई क्यान राइट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एन्ड देन आई क्यान राइट टाइम्स अफ एक्स माइनस वाई. दिस इज यर एलसीएम. ओके, अब दिस क्वेसन आस्क्स अस टु फाइन्ड द एलसीएम अफ गिभन टू एक्सप्रेसन्स. फर्स्ट एक्सप्रेसन इज 2x स्क्वायर माइनस x minus 1, right? Now can I write this as 2x square minus 2x plus x minus 1? ओके होइन, यो माइनस एक्सलाई मैले ब्रेक गरेर माइनस 2x प्लस एक्स लेखेको छु. ओके, नाउ दिस विल गिभ मी, यदि मैले यी दुईवटा टर्म्सबाट 2x कमन लिएँ भने आई क्यान राइट दिस एज x माइनस 1 र यी दुईवटा टर्म्सबाट म प्लस 1 कमन लिन्छु, सो आई क्यान राइट दिस एज प्लस 1 टाइम्स अफ x माइनस 1. अब हामीसँग यी दुईवटा टर्म्स छन्, यी दुईवटा टर्म्सबाट म x माइनस 1 कमन लिन्छु, सो आई क्यान राइट दिस एज x माइनस 1 टाइम्स अफ 2x प्लस 1. ओके, अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन हामीलाई दिएको छ 24x टु द पावर 4 प्लस 3x, होइन? म यी दुईवटा टर्म्सबाट 3x कमन लिन्छु, सो आई क्यान राइट दिस एज 8x क्युब प्लस 1, राइट? नाउ दिस क्यान बी रिटन एज 3x टाइम्स अफ 2x होल क्युब प्लस 1 होल क्युब. दिस इज इन द फर्म अफ a क्युब प्लस b क्युब, होइन? सो आई क्यान राइट दिस एज 3x टाइम्स अफ a प्लस b, द्याट इज 2x प्लस 1 टाइम्स अफ 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, राइट? अब हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ एलसीएम. हामीले दुवै एक्सप्रेसनलाई फ्याक्टराइज गरिसक्यौँ. सबभन्दा पहिला हामी के लेख्छौँ, ती टर्म्सहरू जुन कमन छन्. सो 2x प्लस 1 इज कमन इन बोथ द एक्सप्रेसन्स, सो आई क्यान राइट 2x प्लस 1.
त्यस पछाडि वी हेभ x minus 1, वी हेभ 3x एन्ड वी हेभ 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब एउटा कुरा के ध्यान राख्नु भने नि यस्ता जुन सिंगल टर्म्सहरू हुन्छ जस्तै यसमा 3x भयो हैन, यस्ता टर्म्सहरूलाई हामी बिचमा कतै पनि राख्न सक्छौँ। तर यस्ता तपाईँले हेर्नुभयो होला यस्ता सिंगल टर्म्सहरूलाई म जहिले पनि प्राय म स्टार्टिङमा हाल्ने प्रयास गर्छु। किनभने त्यसो गर्दा एक्सप्रेसन अलिकति निट एन्ड क्लिन देखिन्छ, त्यति मात्र कुरा हो। तपाईँले यसलाई बिचमा कतै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीभाइहरू, अगाडि बढौँ। इन दिस क्वेसन आवर फर्स्ट एक्सप्रेसन इज गिवन एज 16a to the power 4 plus 4a square plus 169। अब के हामी यसलाई a plus b होल स्क्वायरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ? अलिकति गाह्रो देखिन्छ, राइट? सो यसलाई हामी के गरौँ भने हामी 16a to the power 4 लाई लेखौँ 4a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 169 लाई हामी लेखौँ 13 होल स्क्वायर एन्ड देन वी हेभ 4a स्क्वायर, राइट? नाउ दिस इज इन द फर्म अफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हैन, सो आई क्यान राइट इट एज 4a स्क्वायर प्लस 13 होल स्क्वायर माइनस 2 into 4a स्क्वायर into 13 प्लस 4a स्क्वायर। यसलाई सल्भ गरौँ त, विल गेट दिस एज 4a स्क्वायर प्लस 13 होल स्क्वायर माइनस 13 into 4 is 52, 52 into 2 is 104, a square plus 4a square. Okay, now minus 104a square plus 4a square will give me minus 100a square. So I can write it as 4a square plus 13 whole square minus 100a square. This can be written as 4a square plus 13 whole square minus 10a whole square. Right, now this is in the form of a square minus b square, so I can write it as 4a square plus 13 minus 10a, 4a square plus 13 plus 10a हैन। अब यदि यसलाई मैले रिअरेन्ज गरेर लेखेँ भने आई क्यान राइट इट एज 4a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 13 टाइम्स अफ 4a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 13, राइट? यतिसम्म हामी क्लियर छौँ। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हामीलाई भनिएको छ 8a क्यूब प्लस 2a टाइम्स अफ 2a प्लस 13 प्लस 16a स्क्वायर, राइट? अब सबभन्दा पहिला हामी यो 2a लाई यो 2a प्लस 13 सँग मल्टिप्लाई गरौँ त। आई विल गेट 8a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 26a प्लस 16a स्क्वायर, राइट? नाउ दिस क्यान बी रिटन एज 8a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर विल गिभ मी 20a स्क्वायर प्लस 26a। अब हामी यसबाट कमन लिउँ, जे कमन लिन सक्छौँ त्यो कमन लिउँ। आई क्यान टेक 2a कमन, 2a into 4a square will give me 8a cube, 2a into 10a will give me 20a square and then we have 26a हैन। So 2a into 13 will give me 26a। अब यसलाई के ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ? हेरौँ है त। अब यसलाई ब्रेकडाउन गर्नै परेन किनभने हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसनमा पनि यो टर्म छ हैन, 4a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 13। सो दिस विल द कमन टर्म। यदि हामीलाई एचसीएफ निकाल्न भनेको भए यो टर्म हाम्रो एचसीएफ भइहाल्थ्यो हैन, तर अहिले हामीले एलसीएम निकाल्नु पर्ने छ। सो सबभन्दा पहिला हामी के लेख्छौँ? कमन टर्म्स, दुवै एक्सप्रेसनमा कमन भएका टर्म्सहरू। सो दिस विल बी 4a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 13 हैन, एन्ड देन वी विल हेभ रिमेनिङ टर्म द्याट इज 4a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 13, 4a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 13 र सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के बचेको छ? 2a। सो दिस इज यर एलसीएम। ओके साथीभाइहरू, अगाडि बढौँ। यस क्वेसनमा हामीलाई तीनवटा एक्सप्रेसन दिएका छन् र हामीलाई भनिएको छ टु फाइन्ड द एलसीएम। अब फर्स्ट एक्सप्रेसन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। दिस क्यान रिटन एज एक्स होल स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर। दिस इज इन द फर्म अफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो आई क्यान राइट इट एज एक्स प्लस 2y टाइम्स अफ एक्स माइनस 2y, राइट? सेकेन्ड एक्सप्रेसन इज गिभन एज एक्स स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर। अब सबभन्दा पहिला हामी के हेरौँ भने के हामी कमन लिन सक्छौँ? सक्दैनौँ। के हामी यसलाई a प्लस b होल स्क्वायरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ? त्यो पनि सकिँदैन। के हामी यसलाई कुनै तरिकाले ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ? अब त्यो हेरौँ। हामी के हेर्छौँ भने यहाँ यो x को कोफिसिएन्ट के छ? यो एक्स स्क्वायरको कोफिसिएन्ट के छ? 1, राइट? 1 into 2 विल गिभ मी 2, राइट? सो मैले यो xy लाई यसरी ब्रेक गर्नु पर्यो सच द्याट द प्रडक्ट इज इक्वल टु x 2x स्क्वायर y स्क्वायर एन्ड द सम इज इक्वल टु xy। ओके, सो यसलाई
हामी यसरी लेख्न सक्छौँ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस xy माइनस 2y² राइट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 2xy माइनस xy विल को प्रोडक्ट के कति हुन्छ माइनस 2x² y² हामीलाई त्यो प्रोडक्ट चाहिन्थ्यो हैन र 2xy माइनस xy विल गिभ मी प्लस xy सो सम इज इक्वल टू दिस मच हामी यसलाई यसरी ब्रेक गर्न सक्छौँ अब यी दुईवटा टर्म्सबाट लेट अस टेक x कमन आई क्यान राइट दिस एज x प्लस 2y माइनस y times of x plus 2y. So this can be written as x plus 2y times of x minus y. Okay. Similarly, third expression is given as x minus 2y whole square plus 8xy. Right. Now this can be written as यसलाई हामी expand गरौँ त I can write it as x square minus 2 into x into 2y plus 4y square plus 8xy. This can be written as x square minus 4xy 2x into 2y will give me 4xy right plus 4y square plus 8xy. Now this can be written as x square minus 4xy plus 8xy will give me plus 4xy plus 4y square. Now this is in the form of a plus b whole square right हेरौँ है त x whole square plus 2 into x into 2y plus 2y square गरेर हामी यस एक्सप्रेसनलाई लेख्न सक्छौँ राइट सो दिस इज इन द फर्म अफ x प्लस 2y होल स्क्वायर ओके x प्लस 2y होल स्क्वायर भनेको x प्लस 2y टाइम्स अफ x प्लस 2y राइट सो यदि हामीले फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड एक्सप्रेसन हेऱ्यौँ भने वी क्यान सी x प्लस 2y इज कमन सो आई क्यान राइट x प्लस 2y वन्स राइट अब त्यस पछाडि हामीसँग यसमा छ x minus 2y कमन छ अरू कुनै एक्सप्रेसन्सहरुमा छैन सो आई क्यान राइट x minus 2y and then we have x minus y so I can write x minus y and then we have x plus 2y right so I can write it as x plus 2y whole square times of x minus 2y times of x minus y okay साथीभाइहरु अगाडि बढौं यस क्वेशनमा पनि we have been given three expressions okay so first expression has been given as a to the power 4 plus a square plus 1 यसलाई I can write a square whole square plus 1 whole square plus a square now this is in the form of a square plus b square so I can write it as a square plus 1 whole square minus 2a square plus a square this can be written as a square plus 1 whole square minus a square this can be written as a square plus 1 whole square minus a whole square. Now this is in the form of a square minus b square so I can write it as a square plus 1 minus a times of a square plus 1 plus a. This will be equal to a square minus a plus 1 a square plus a plus 1. मैले यो एक्सप्रेसनलाई रिअरेन्ज गरेर मात्र लेखेको छु तल ओके अब आवर सेकेन्ड एक्सप्रेसन इज a cube minus 1. This is basically a whole cube minus 1 whole cube. This is in the form of a cube minus b cube. So I can write this as a minus 1 times of a square minus a square plus a plus 1. This is our second expression. And third expression is a cube minus a square plus a. यदि मैले यी तीनवटै टर्म्सबाट a कमन लिए भने I can write it as a times of a square minus a plus 1. राइट अब यदि मैले फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड एक्सप्रेसन हेरेँ भने आई क्यान से दिस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इज कमन इन फर्स्ट एन्ड थर्ड एक्सप्रेसन सो आई क्यान राइट इट एज ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 राइट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इज कमन इन दिस टू एक्सप्रेसन्स सो आई क्यान राइट इट एज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 राइट अब बाँकी के बच्यो त वी हेभ ए माइनस 1 एन्ड देन वी हेभ a also right so LCM can be written as this or यदि हामीले हेर्यौं भने we can see a minus 1 times of a square plus a plus 1 is written as a cube minus 1 so a minus 1 र a square plus a plus 1 मिलाएर हामी a cube minus 1 लेख्न सक्छौं right so this can be written as a times of a cube minus 1 times of a square minus a plus 1. This is your LCM. Okay? साथीभाइहरु अगाडि बढौं अब यस क्वेशनमा पनि हामीलाई तीनवटा एक्सप्रेसन्स दिएका छन् र वी हेभ बीन आस्क्ड टु फाइन्ड द LCM.
आवर फर्स्ट एक्सप्रेसन इज 16a to the power 4 plus 1 divided by 16a to the power 4. अब यदि मैले यसलाई रिअरेन्ज गरेर 16a to the power 4 plus 1 divided by 16a to the power 4 plus 1 लेख्न सक्छु, राइट? नाउ दिस क्यान बी रिटन एज 4a square whole square plus 1 divided by 4a square whole square plus 1. Okay, now this is in the form of a square plus b square, है ना? So I can write it as 4a square plus 1 by 4a square whole square minus 2 into 4a square into 1 divided by 4a square plus 1. मैले के गरेको छु भने यदि मैले यसलाई a र यसलाई b माने भने मैले यो के भयो हाम्रो a square plus b square को फर्ममा, राइट? मैले यसलाई a square plus b square is equal to a plus b whole square minus 2ab को फर्ममा एक्सप्रेस गरेको छु, त्यति मात्र गरेको छु है मैले. अब दिस क्यान बी रिटन एज 4a square plus 1 divided by 4a square whole square minus, अब यो 4a square र 4a square ले एकअर्कालाई डिभाइड गर्छ. अब हामीसँग के बच्छ -2 plus 1 हैन. नाउ this will be equal to 4a square plus 1 divided by 4a square whole square minus 2 plus 1 will be equal to -1. -1 can be written as -1 whole square, right? Now this is in the form of a square minus b square. So हामी यसलाई लेख्न सक्छौं 4a square plus 1 divided by 4a square minus 1 times of 4a square plus 1 divided by 4a square plus 1, right? Now यसलाई रिअरेन्ज गरेर लेखौं त. I can write this as 4a square minus 1 plus 1 divided by 4a square and 4a square plus 1 plus 1 divided by 4a square, right? यतिसम्म हामी क्लियर छौं. अब सेकेन्ड टर्म हामीलाई दिएको छ 8a cube plus 1 by 8a cube. सेकेन्ड एक्सप्रेसन इज 8a cube plus 1 divided by 8a cube. This can be expressed as 2a whole cube plus 1 divided by 2a whole cube. So I can write it as 2a plus 1 divided by 2a times of 2a whole square, which will give me 4a square minus 2a into 1 divided by 2a, a into b भयो है, यो बेसिकली a into b, right? Plus 1 divided by 2a whole square, which will give me 1 divided by 4a square. Okay, now this can be written as 2a plus 1 divided by 2a times of 4a square minus 1, किनभने यो 2a र 2a will divide each other, plus 1 divided by 4a square. This is our second expression, right? And third expression has been given as 8a cube. Third expression has been given as 8a cube plus 2a plus 1 divided by 2a, हैन? अब यस एक्सप्रेसनबाट हामी 2a कमन लिउँ त. इफ आई टेक 2a कमन आई क्यान राइट इट एज 4a स्क्वायर, हैन? 2a मा यदि मैले 4a स्क्वायर मल्टिप्लाई गरेँ भने आई विल गेट 8a क्यूब, एन्ड 2a मा यदि मैले 1 मल्टिप्लाई गरेँ भने आई विल गेट 2a. अब यो जुन लास्टको टर्म हामीसँग छ द्याट इज 1/2a, हैन? यो 1/2a मा हामी 2a ले मल्टिप्लाई गर्दैछौँ. वी आर मल्टिप्लाइङ दिस बाई 2a. अब यसलाई अफसेट गर्नलाई हाम्रो लास्टको टर्म त 1/2a हो, हैन? हाम्रो ओरिजिनल टर्म त यो, हामीले लास्टमा यही चाहिएको. यदि म 2a ले मल्टिप्लाई गर्दैछु माथि भने मलाई 2a ले डिभाइड पनि गर्नु पर्यो, सो द्याट दे क्यान अफसेट इच अदर, राइट? सो यदि मैले यो 2a लाई बाहिर लेखेको छु भने म भित्र के लेख्न सक्छु 1 डिभाइड बाई 2a इन्टु 2a, सो द्याट विल बी इक्वल टु 1 डिभाइड बाई 4a स्क्वायर, राइट? यतिसम्म हामी क्लियर छौँ. अब यदि हामीले फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड एक्सप्रेसनमा हेऱ्यौँ भने वी क्यान सी फर्स्टमा वी हेभ 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4a स्क्वायर, हैन? सेकेन्डमा छैन तर थर्डमा छ 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 by 4a स्क्वायर. सो एलसिएममा one of our terms will be 4a square plus 1 plus 1 by 4a square, right? अब बाकी रिमेनिङ टर्म्स के छ त एक्सप्रेसन 1 मा हेरौँ त. 1 मा वी हेभ अब बाकी बचेको 4a square minus 1 plus 1 by 4a square, that is present in second term also. So I can write it as 4a square minus 1 plus 1 by 4a square, right? अब सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हामीसँग अब अरु के पनि बचेको छ 2a plus 1 by 2a, हैन? सो आई क्यान राइट हेयर 2a plus 1 by 2a. र थर्ड एक्सप्रेसनमा हामीसँग के बचेको छ 2a.
सो आई क्यान राइट 2a. सो दिस इज यर एलसिएम. ओके साथीभाइहरू अगाडि बढौँ. इन दिस क्वेसन वी हेभ टु फाइन्ड बोथ द एचसीएफ एन्ड एलसिएम एन्ड वी हेभ बिन गिभन टू एक्सप्रेसन्स. फर्स्ट एक्सप्रेसन इज x to the power 4 plus 2b square minus a square whole multiplied with x square plus b to the power 4. अब पहिला यो ब्राकेटभित्रको टर्मलाई यो एक्स स्क्वायरसँग मल्टिप्लाई गरौँ त. हेरौँ के पाउँछौँ. x to the power 4 plus 2b square x square minus a square x square plus b to the power 4. राइट. अब यदि हामीले यो फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म र थर्ड टर्मलाई एक ठाउँमा लेख्यौँ भने वी क्यान राइट दिस एज x to the power 4 plus 2b square x square plus b to the power 4 minus a square x square. राइट. अब के हामी यसलाई a plus b होल स्क्वायरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ? हेरौँ त. आई क्यान राइट x to the power 4 एज x square होल स्क्वायर प्लस 2 into a. एमा हामीसँग के छ? x square. राइट. अब एकपल्टको लागि b हामी छोडिदिउँ. अब यो जुन b to the power 4 छ यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ b square होल स्क्वायर. राइट. सो आवर b इज b square. सो आई क्यान राइट हियर b square. होइन. नाउ 2 into x square into b square will be equal to 2b square x square. राइट. सो दिस इज इन द फर्म अफ a plus b होल स्क्वायर. राइट. अब यहाँ बाँकी बचेको टर्म के छ? माइनस a square x square. सो आई क्यान राइट दिस एज x square प्लस b square होल स्क्वायर माइनस a square x square म ax होल स्क्वायर लेख्न सक्छु. होइन. नाउ दिस इज इन द फर्म अफ a square माइनस b square. सो आई क्यान राइट इट एज x square प्लस b square माइनस ax टाइम्स अफ x square प्लस b square प्लस ax. यसलाई अब रिअरेन्ज गरेर लेखौँ त. आई क्यान राइट इट एज x square माइनस ax प्लस b square टाइम्स अफ x square प्लस ax प्लस b square. राइट. दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेसन. हामीले सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा दिइएको छ x to the power 4 प्लस 2ax क्युब प्लस a square x square माइनस b to the power 4. ओके. अब यदि हामीले यी तीनवटा टर्म्स हेऱ्यौँ भने वी क्यान एक्सप्रेस दिस इन द फर्म अफ a प्लस b होल स्क्वायर. अब फेरि हेरौँ. x to the power 4 क्यान रिटर्न एज x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इन्टु. अब हामीसँग a के छ? a इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर. सो हामी यता एक्स स्क्वायर लेख्छौँ. अब b को लागि हामी खाली ठाउँ छोडौँ एकपल्टको लागि. होइन. त्यस पछाडि हामीसँग छ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर. a स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यान रिटर्न एज ax होल स्क्वायर. राइट. अब दिस इज आवर b. होइन. सो यता हामी लेख्छौँ इन्टु ax. अब 2 इन्टु एक्स स्क्वायर इन्टु ax विल बी इक्वल टु 2a इन्टु एक्स क्युब. होइन. एक्स स्क्वायर इन्टु एक्स विल गिभ मी एक्स क्युब. राइट. सो दिस टर्म यो दिस सेटिस्फाइज आवर यो माथिको यति पार्ट. राइट. बाँकी बचेको टर्म छ हामीसँग b to the power 4. सो यसलाई दिस इज इन द फर्म अफ a प्लस b होल स्क्वायर. सो आई क्यान राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस ax होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर. नाउ दिस इज इन द फर्म अफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो आई क्यान राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस b स्क्वायर टाइम्स अफ एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b स्क्वायर. अब यदि हामीले एचसीएफ निकाल्नु पर्ने छ भने यदि मैले फर्स्ट र सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेरेँ भने आई क्यान सी द्याट एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b स्क्वायर इज कमन इन बोथ द एक्सप्रेसन्स. सो आई क्यान राइट एचसीएफ एज एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b स्क्वायर. अब यदि मलाई एलसिएम लेख्नु पऱ्यो भने आई क्यान राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b स्क्वायर. दिस टर्म इज कमन इन बोथ द एक्सप्रेसन्स. होइन. त्यस पछाडि बाँकी बचेको टर्म के छ? एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस b स्क्वायर. x square minus ax plus b square and then we have x square plus ax minus b square. राइट. यो चाहिँ यस टर्ममा छ. यो चाहिँ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा छ है. ओके. सो दिस इज आवर एचसीएफ एन्ड एलसिएम. अब यस्तै खालको एउटा अझै क्वेसन गरौँ. द्याट विल बी द लास्ट क्वेसन अफ दिस भिडियो. साथीभाइहरू अगाडि बढौँ. दिस क्वेसन इज भेरी मच सिमिलर टु आवर प्रिभियस क्वेसन. यस क्वेसनमा पनि हामीलाई एचसीएफ र एलसिएम फाइन्ड गर्नुपर्ने छ एन्ड वी हेभ बिन गिभन 2 एक्सप्रेसन्स. ओके. First expression is a to the power 4 plus b to the 4b to the power 4 plus a square plus b square times of 5b square. अब यो ब्राकेटभित्र रहेका टर्म्सलाई पहिला हामी 5b स्क्वायरसँग मल्टिप्लाई गरौँ. विल गेट दिस एज a to the power 4 plus 4b to the power 4 plus 5a square b square plus 5b to the power 4. Right. Now we have this can be written as 4a to the power 4 plus 5a square b square plus
4b to the power 4 plus 5b to the power 4 will give me 9b to the power 4. Right? Now this can be written as a square whole square plus 3b square whole square. मैले a to the power 4 लाई a square whole square लेखेँ र 9b to the power 4 लाई 3b square whole square लेखेँ plus 5a square b square. Right? Now this can be written as a square plus 3b square whole square minus 2 into a square into 3b square plus 5a square b square. Right? This can be written as a square plus 3b square whole square minus 2 into 3 is 6. We have 6a square b square plus 5a square b square. This can be written as a square plus 3b square whole square minus a square b square. Right? अब this can be written as a square plus 3b square whole square minus ab whole square. Right? This is in the form of a square minus b square. So I can write it as a square plus 3b square minus ab times of a square plus 3b square plus ab. Okay? अब यसलाई रिअरेन्ज गरेर लेख्यौँ भने I can write this as a square minus ab plus 3b square times of a square plus ab plus 3b square. This is our first expression को simplification. Right? अब second expression is a to the power 4 plus 2a cube b plus a square b square minus 9b to the power 4. हैन? अब यदि हामीले सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा फर्स्टको तीनवटा टर्म्स हेऱ्यौँ भने के हामी यसलाई a प्लस b होल स्क्वायरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ? यस वी क्यान. हेरौँ है त कसरी. वी क्यान राइट इट एज a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इन्टु a के छ हाम्रो a इज a स्क्वायर. सो आई क्यान राइट इट एज a स्क्वायर. अब b अहिले हामीलाई थाहा छैन, b को लागि x लागि छोडिदिउँ. अब a होल a स्क्वायर b स्क्वायर क्यान बी रिटन एज ab होल स्क्वायर. हाम्रो b के हुने भयो? b इज ab हैन. सो अब 2a स्क्वायर इन्टु ab विल गिभ मी 2a क्युब b. राइट? हामीले 2a क्युब b पायौँ. सो दिस इज इन द फर्म अफ a प्लस b होल स्क्वायर. राइट? र लास्टमा हामीसँग बचेको छ 9b टु द पावर 4. राइट? नाउ दिस क्यान बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस ab होल स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर होल स्क्वायर. हैन? यो 9b टु द पावर 4 लाई मैले 3b स्क्वायर होल स्क्वायर लेखेको छु. ओके? अब दिस इज इन द फर्म अफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो आई क्यान राइट इट एज a स्क्वायर प्लस ab माइनस 3b स्क्वायर टाइम्स अफ a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3b स्क्वायर. राइट? अब यदि मैले फर्स्ट र सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हेरेँ भने आई क्यान सी द्याट दिस टर्म इज कमन इन बोथ द एक्सप्रेसन्स. राइट? सो माई HCF will be equal to a square plus ab plus 3b square and LCM will be equal to, पहिला हामी कमन टर्म्स लेखौँ. कमन टर्म्स इज a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3b स्क्वायर. हो त्यस पछाडि रिमेनिङ के छन् त? a स्क्वायर माइनस ab प्लस 3b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ab प्लस 3b स्क्वायर टाइम्स अफ a स्क्वायर प्लस ab माइनस 3b स्क्वायर. ओके?